Good morning, grade 3. I hope you all are fine. This is Miss Nazia Tawhid, your computer teacher. And class, in computer, last time we have read about the chapter More About Paint. More about paint, and after that we have done, first of all, we have done the reading and the practical, and then after we have done the question answer, question number 1, 2, and 3. Now we will do question number 4, in which we are going to read about the shortcut keys, the actions which we have performed on MS Paint. We are going to read about the shortcut keys of the actions. Like we have performed copy. The shortcut key of copy is Control C. Paste, जब हम किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं, then we paste it also. What is the shortcut key for paste? Control V. What is the shortcut key for cut? Control X. What is the shortcut key for undo? Control Z. What is the shortcut key for redo? Control Y. What is the shortcut key for resize and skew? That is Control W. You have to write down in the copy and you have to learn it by heart. This is your work. And after that we have some terms here which you have to define. First term is undo. Undo क्या होता है? It is used to reverse the last action performed. Last action जो भी हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? undo. Then redo. It is used to reverse the effect of undo. अगर हमने लास्ट कोई undo एक्शन किया है and if we want to reverse it, then we use the action redo. Zoom in. अगर पिक्चर को बड़ा करना हो हमें तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्शन zoom in. जूम आउट. अगर पिक्चर को स्मॉल करना हो, इस व्यू स्मॉलर करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? जूम आउट. कट ऑप्शन. वाई वी यूज़ कट ऑप्शन? जब एक चीज़ को किसी एक फ़ोल्डर से, किसी एक फ़ाइल को किसी एक फ़ोल्डर से कम्प्लीटली ख़त्म करके दूसरे फ़ोल्डर पे पेस्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? कट ऑप्शन. कॉपी ऑप्शन. वी यूज़ कॉपी ऑप्शन टू डुप्लीकेट द फाइल. किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को या फाइल को डुप्लीकेट बनाने के लिए, यानी वो जिस जगह मौजूद है वो वहाँ तो रहे ही, जिस जगह हम चाह रहे हैं वहाँ पे भी हमारे पास आ जाए, उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए वी यूज़ ऑप्शन कॉपी. रीसाइज. रीसाइज हम कब यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज द साइज, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ ड्राइंग. Mostly I am using the word drawing in this action in this chapter because we are reading chapter More About MS Paint, and in MS Paint what do? We always do drawing on paint. We use MS Paint software for the drawing. Why we use MS Paint software? We use this software for drawing. That's why in every definition you can see they are talking about a drawing, the part of a drawing, the size of a drawing, the selected part of a drawing. तो ये किसी भी drawing के बारे में ही ये सारे action perform होंगे. Okay, this is your work. I will upload the picture of the work with it. It will help you to complete your picture. This is your work for today. Thank you and Allah Hafiz.